Good morning everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of Indian Express of 20th December 2022. Coming to first article. First article talks about the anti-conversion law which has been implemented by Haryana government. Then the important thing in this article is that as per Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Rules 2022, the burden of proving the innocence, that is कि जो कन्वर्जन कर रहा है बाय फोर्स और अंडर थ्रेट और बाय कोर्जन एल्यूरमेंट, ये सबको बोलते हैं कन्वर्जन, इलीगल कन्वर्जन, और बाय मैरिज, इसका जो बर्डन रहेगा दैट विल बी ऑन द एक्यूज्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. जो प्रूफ देना होगा कि मैं इसके अंदर मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा था या कर रही थी, इसका प्रूफ जो देना पड़ेगा वो अक्यूज को देना पड़ेगा, नॉट बाय द गवर्नमेंट और नॉट बाय द विक्टिम. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. देन सेकेंड पॉइंट इज दैट any conversion are required to seek prior permission from the administration. The priest initiating the conversion are required to provide in advance to the DM details of the guests who are likely to be attending the ceremony. Further, there has to be a secure payment of maintenance by the मतलब जो भी कन्वर्जन कर रहा है टू हिज और हर रिलीजन. तो इसका रैशनल क्या है कि इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर द पीपल हु आर डूइंग कन्वर्जन फॉर द रॉन्ग पर्पसेस. तो इसमें इलीगल कन्वर्जन को कैसे डिनोट करे, तो की पॉइंट क्या क्या है. तो की पॉइंट सिर्फ यही है कि conversion with the use of force, under threat, undue influence, coercion, allurement, any fraudulent means or by marriage, ये जो पूरा है इसको यूज कर सकते हैं एग्जाम में आंसर में. बिकॉज राइट टू प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन इज अ राइट अंडर आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर हैज टू बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और वो भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में. दैट इज कन्वर्जन ड्यू टू फोर्स, एल्यूरमेंट, इलीगल कन्वर्जन इज नॉट मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. फर्दर रिगार्डिंग द कोलिजियम सिस्टम, आवर लॉ मिनिस्टर हैज रिमार्क्ड दैट NJAC Act, which was passed in 2014 under 99 Constitutional Amendment Act, was termed as violative of Constitution by the Supreme Court itself. He says that collegium system of appointing judges is opaque and it is not accountable and it is alien to the Constitution. तो पूरा आर्टिकल में से यही पॉइंट है, और अभी कॉलेजियम के बाद जो भी डिस्कशन होगा बाद में इसको करेंगे. देन नेक्स्ट पेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देन on page number 6, only one article is important, that is SC High Court of Delhi says that it is not the constitutional court duty to regulate public urination. It is a matter of society, it is a matter of executive. Or the petition claimed that the use of sacred images of religious deity on the walls of public urination is a violation of Article 25 of Constitution. However, High Court has acknowledged that there is a growing menace created by public urination itself. But जो अगर solution है menace का, it lies with the executive, it lies with the society, it not lies with the court. कोर्ट कैसे इसको रेगुलेट करेगा या इसको फिर बैन करेगा, ये बात हाई कोर्ट ने कहा है. Further, next article
is very important with respect to security and integrity of India. On page number 8, INB Minister Anurag Thakur has said that collective efforts of various intelligence agencies have weakened the terror ecosystem. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि सिंस द एरा ऑफ पीस, मतलब 2014 के बाद से there has been sharp decline of 80% of civilian death. मतलब insurgency related violence has decreased by 80% and civilian death have decreased by 89%. So this data can be used in exam. Further, 6,000 militants have surrendered since 2014. What all acts were used in this Unlawful Activities Prevention Act? Further, next point is NIA Amendment Act 2019, in which individual can be also designated as terrorist. NIA measures and its powers were increased substantially. It can now prosecute and the individual staying in foreign countries, and it can also investigate the crime in foreign country also. और NIA हो गया, UAPA हो गया. उसके बाद since 2014 there has been several peace agreements such as, ये सब important point है, Bodo Accord in 2020, Brue-Riang Agreement in 2020, LFFT NLFT Tripura Agreement in 2019, Karbi-Anglong Agreement 2021, Assam-Meghalaya Interstate Boundary Agreement 2022. These all can be used with data and facts with the question coming in exam regarding to Northeast. उसके बाद जो Armed Force Special Power Act, that is AFSPA, that has been also withdrawn from large part of Northeast, including whole of Tripura and Meghalaya. This shows that there is a growing of trust between the army and the public. Further, the public is also moving into mainstream politics and also joining the mainstream society in the Northeast. Further, it only 3 districts of Arunachal Pradesh and 60% of Assam is free from AFSPA. Then, India is not only doing India is also making efforts in rescuing its citizens from foreign land, such as Operation Ganga in 2022, where 22,500 citizens were rescued from Ukraine. Further, 670 Indian citizens were rescued from Afghanistan in Operation Devi Shakti. Further, in COVID-19 crisis and the Vande Bharat mission, 1.83 crore citizens were brought back home and 654 from Wuhan. Then next fact is NIA conviction rate is very high. Out of 89 cases of trial, in which 83 cases have been conviction. Then incident in Jammu Kashmir. The terror incident has decreased from 417 in 2018 to 229. तो ये सब पूरा डेटा है, पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिगार्डिंग टू मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम GS3 सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव. डेटा भी है, फैक्ट भी है, साथ ही साथ पीस एग्रीमेंट भी है नॉर्थ ईस्ट का, और फिर इंस्टीट्यूशन भी दिया हुआ है, एक्ट भी दिया हुआ है, तो इसको लिख लेना चाहिए. द नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 11, where the rationale for more comprehensive data protection law, data privacy law is been given here. The article talks about American Data Privacy Protection Act and also GDPR. This article also says that European GDPR is more wide, more restrictive
and around 80% of the countries have data protection privacy legislation, but not all of them are as strong as of Europe, US and Australia, whereas in India and South Asia it is very limited in their scope. It also says that data is new oil. Before, various government has fought wars among each other regarding regarding controlling the valuable resources like oil, then timber, then railroad, etc. Now data is new oil, so it is very important for the country like India to preserve its data and fight for data sovereignty, data localization, etc. Because now after US China trade war and Russian invasion of Ukraine, and US is waging war by limiting the supply of chips and technology and sanctioning the countries which are supplying chips and technology to Russia and China, etc. Further, there has been increase of various data producing countries such as Google, Facebook, Tencent have built trillion dollar companies built on data. So at a population scale, India is second largest, so it is very important for creating a digital public infrastructure and also securing it from cyber attack, because last week India's data have been already compromised due to cyber attack on AIMS. तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग पास ऑलरेडी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सच एस आधार, पेमेंट ऑफ UPI, नेशनल हेल्थ स्टैक, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक्सेट्रा. तो ये सब होने के बावजूद भी और हम लोग लीप फ्रॉगिंग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो आज डेटा अवेलेबल है, आज जो डेटा पेनिट्रेशन है अमंग द इंडियन सोसाइटी, दैट इज़ ह्यूज एज कम्पेयर टू वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर दीज डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर and also to make certain laws such as data is being used very securely, and also there has to be some form of accountability by the companies and also the government. There has to be given respect to the data privacy and individual privacy. तो इसमें बता रहे हैं कि जो बिल है अभी जो डिजिटल इंडिया एक्ट होगा वो इट विल रिप्लेस द IT एक्ट. फर्दर जो एक फ्री मार्केट है रिगार्डिंग गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा, वेयर यू आर द प्रोडक्ट, यूज़र इज़ द प्रोडक्ट, बिकॉज उसमें कोई सब्सक्रिप्शन बेसिस पर नहीं है, वो फ्री है. डेटा कभी फ्री नहीं होता है, वो अगर आप फ्री है सर्विस तो आप प्रोडक्ट है. तो ये कहना चाह रहा है कि उनको मॉडल बदलना होगा, क्योंकि जो नया प्राइवेसी लॉ आएगा हो सकता है कि प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे. तो ये कहना चाह रहे हैं कि डेटा में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन होना चाहिए, डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, डेटा सॉवरेंटी का बात करना चाहिए, डिजिटल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना चाहिए, अपग्रेडेशन ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी होना चाहिए. पूरा ओवरऑल जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है विद रिगार्डिंग टू साइबर टेक्नोलॉजी इन GS पेपर 3. Then next article talks about Supreme Court disposition of cases of around 56,844 between November 9th and December 16th. CJI has said that bench will take up 10 transfer and 10 bail pleas every day, because it has also a judicial power of under Article 32 and 31, 36 of the Constitution, which gives importance to personal liberty of the citizen, and Constitution has given and court is duty bound, obligated towards the public freedom of rights. लेकिन क्या क्या इशू है, फ्रिवोलियस PIL, और साथ ही साथ बैकलॉग बहुत ज़्यादा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट में देरी है, और साथ ही साथ एब्सेंट जज का सीट बढ़ाना चाहिए, वो अभी तक
नहीं हुआ है. Then next article is on page number 15, where there has been increase in trends in organ donation from 2017 to 2019 and 2021. Approximately 10,644 organs were harvested from living donor. फर्दर इसमें क्या इशू है कि जो ऑर्गन का डिमांड है, ट्रांसप्लांट का डिमांड है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्गन डोनेटेड. कैसे? एस्टिमेटेड अराउंड 1.5 to 2 lakh person need kidney transplantation. Only around 8,000 get that. Further, 80,000 need liver transplantation. Only 1,800 get one. Further, 10,000 need heart transplantation. Only 200 get it. So there is a growing demand of organ transplantation, and this article gives rationale behind organ donation by the victim who are dead due to from brain dead person and also the cardiac arrest death. जो भी एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, वो भी डोनेट कर सकते हैं. तो ये बोलना चाह रहे हैं. इंडिया हैज़ अ ऑर्गन डोनेशन रेट ऑफ अराउंड 0.5 per million as compared to Spain which has around 50 per million. तो हम लोग को ऑर्गन डोनेशन के हिसाब से जो अवेयरनेस है वो बढ़ाना चाहिए ताकि जिसको ज़रूरत पड़े उनको मिल सके. The next article talks about the funding of Google company to IIT Madras for studying AI bias and also conducting research on various aspects of artificial intelligence in crop disease monitoring, predicting yield, and bringing efficiency in Kisan call center, etc. Then next article is very important on page number 18. Climate justice doesn't mean that you let the world be in darkness. Further, everyone has right to life with dignity. मतलब हम लोग को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए बिटवीन द क्लाइमेट जस्टिस और डेवलपमेंट में. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडियाज़ का इन्वायरमेंट टारगेट क्या क्या है. इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 33% बाय 2030 compared to 2005 levels. Further, it has promised to generate 40% of electricity from renewable source of energy by 2030. The next point talks about Glasgow COP26, where India has targeted to set around 50% of renewable source of energy by 2030. Then in 2015 India has formed International Solar Alliance, membership of 130 countries with objective of one sun, one world, one grid to provide seamless electric grid powered by solar power. Then it has given approval for Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. This will help to create more resilient infrastructure in developing countries that can withstand natural disaster. उसके बाद India has also announced Mission Life, that is a behavior change. कैसे पानी का बचत करना चाहिए, कैसे हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में क्या करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, उसके बारे में बात किया जाता है. बिहेवियर चेंजेस कैसे होगा सोसाइटी के अंदर में, इंडिविजुअल के अंदर में, कम्युनिटी लेवल में, टू फाइट क्लाइमेट चेंज. तो 3-4 पॉइंट हो गया. एक मिशन लाइफ, दूसरा ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तीसरा सीडरी, चौथा पॉइंट डिक्रीज 33% ऑफ एमिशन फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030. चौथा 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030. देन उसके बाद बात करते हैं
कि फेज आउट ऑफ फेज डाउन मतलब क्या होता है। फेज डाउन मतलब कम करना फॉसिल फ्यूल को। अगर अभी 500 मिलियन टन यूज़ होता है कोल का, तो उसको कम करके 100 मिलियन टन, 50 मिलियन टन। लेकिन फेज आउट मतलब धीरे धीरे ख़त्म कर देना कोल को। तो ये एग्जाम्पल है वो। तो फेज आउट, कंट्री हैज़ आस्क्ड फॉर फेज आउट, लेकिन इंडिया है इट हैज़ कमिटेड टू फेज डाउन कोल। बोलना चाह रहा है ये आर्टिकल कि फॉर years the western countries have used oil and gases to economic for economic growth and prosperity, but they are complaining that India, China is not using coal and oil, and they are not polluting the world. But the article says that India is a very big country, it needs oil and coal to meet the energy security demands. So India has promised to phase down, not phase out coal. Then this article talks about environmental and need for balance between the environment and development. So next article talks about GM crop. We are already importing 50 to 60% of edible oils that are produced in the country where GM crop is allowed. So this, though the question, the article gives rationale that why we are not growing the GM crops in our own country. So right now only 2 GM crops have been given permission, such as GM mustard and GM cotton. तो यही सब है पूरा आर्टिकल। That's all for today. Thank you.